So if you multiply it by inverse, this will become I, and you need to multiply inverse, left multiplied with inverse on the left hand side. Okay. So finally you get this kind of equation. Now if you expand the left hand side, you will get x of I plus 1 minus x of I, x of I plus 1 equals x of I minus Jacobian inverse into f of xi. So all of this is in matrix format. So it is simple. What you have to do, you have to find, you have to make a function to find the value of the function at the current iteration, and you have to make a function to get the value of the derivative at the current iteration, and you have to find out the inverse of the derivative, inverse of the derivative matrix. You have to multiply them, and with this you will able to find the next value, value of the next iteration, right? The and you need to check this for convergence criteria. What will be the convergence criteria? It will be all the values of this vector should be less than the difference between all the values of this vector and the vector in the previous iteration, which is x bar I, should be less than the tolerance value. If it comes that way, then it will be converged, and you can get out of the loop, right? You can also set limit of iteration so that you don't go too far. And these are the steps if j is singular. In this case, you can use this equation only. I think it will not be much difference if you use this or this. What is the question? Go to the question. So this is the question, right? Okay, initial guess is not given here, but CA naught is given. So you can take the value of A initially as 1, and you can take any random value, but take accordingly. I mean, similar to CA naught, you can take here either 0, 1, half. So you can take like that as initial guess here. These are the 4 functions which are given. Okay, and so this is not rearranged. You need to rearrange so that this is in the form of CA. Okay. Okay. CA has multiple orders. Okay. So in the first equation, there is no CB and no CD. So to find the value of the first equation and find the derivative of the first equation, CD and CB will not be used. So like that, the matrix will have 0 values, right? And the derivative will also have 0, because it does not matter if CB or CD changes, the first equation will not change. Value of the first equation will not change. So this will make it easier as well. And yeah, to find the inverse, you know how to find the inverse, right? You can use Gauss Jordan to find the inverse. Any other questions?
So, like, firstly, when you told you have to take tolerance, so you told you have to take it like the next iteration previous. So we don't have to take the relative approximate error, but you have to only take the approximate error, right? Okay. So tolerance, you need to check that the x of I plus 1 minus x of I is less than tolerance or not. Okay. So it's not relative, it's only approximate error. Yeah. You can take like that also. No need to divide it by xi. Right? But take the absolute value. That's what I want to say. Okay. Okay, sir. Um, so like generally when I saw the questions, my understanding is not that great, but what I understood was that the function like over here f1 f2, so it would have a variable inside it of an like in the whole equation of that function there would be a term of the current iterative step and of the previous iterative step, but in f2 there is no term of the previous iterative step. So is that necessary or So we are going on to further iterations in this one also, right? Because we are finding the value of next iteration using that equation. I did not get your question. What was it? so okay, just for preliminary understanding, in the question given, like what ma'am gave, so all the F capital F terms there are similar to the small f terms in the PDF. All the CA terms are the like x1 terms, and CA Mm-hmm. naught is x of the initial, like the zeroth iteration, like the initial guess. Mm-hmm. And as we go on, the iterations would increase, right? Mm-hmm. So, like, whenever I saw the like equations there, any function like f of f1 or f2 like that, they were having terms of the previous iteration and of the next iteration. Like both the terms were there, but in this only f1 has a term of the previous iteration. Rest all have terms of the current. So But isn't that nice? Jacobi also has previous iteration terms, right? Jacobi, yeah, yes. So have understood what is single variate Newton Raphson, you'd be able to understand this thing where my cursor is. Mm-hmm. Okay, so if you uh, get this to the left hand side, so it seems like we are dividing this Jacobi from this f of xi. So it feels like f of xi upon f dash xi equals delta x. So this is single variate Newton-Raphson only. But this is since this is matrix, so you need to uh, do this. You need to take it to the left hand side by multiplying the inverse Inverse. function. Mm. So it is the same, but the matrix form changes a bit because you can't just divide it by a matrix. You need to multiply by a different matrix to make it I matrix. So that's the thing. So now have you got the feel that this is the same thing as single variate, right? Yes, sir. That is fine. Like I was getting confused because like whenever you're putting X bar, it literally means that we are having a column matrix there. Like there are Yes, many terms like x1, x2, x3 like that. So I was trying exactly. to understand that. So this is a delta x I plus 1 is a column matrix, Yeah. which is x of I plus 1 column matrix minus x of I column matrix, right? Mm. Yes, sir. It is the difference between the current iteration values and the next iteration value. Mm-hmm. Sorry, previous iteration value. Current minus previous iteration value.
So we find the value of the current iteration we find it using the previous iteration values, right? So Mm. all the things on the right hand side here are from the previous iteration values. So if you Yes. take I equals 0, it becomes the guess, initial guess, and then uh, any other I, the it's what we found inside the after doing the iteration, right? Yes, sir. That is so. Okay. In the convergence criteria, okay, a valid point what you raised earlier was if if x of any of x of I becomes smaller than tolerance, then it will not work. So maybe in that case, you'll need to take relative approximate error, which is x of I minus x of I plus 1 minus x of I upon x of I, right? So you need to take care of that. If you think that the answer will be something, it can be something less than tolerance, then you need to take this relative error, right? Otherwise, you can take simple x of I plus 1 minus x of I and compare it with tolerance, and if it is less than tolerance, then you can just take it as solution. Otherwise, if you feel that the of i's may become lesser than tolerance, then you need to check it as relative error. I hope you get my point here. I got confused. Like, why would it like why if I take relative error or if I take absolute error, why should it make a difference if like you to I heard you say that the value would become lesser than the tolerance if we take absolute. No. So what I'm saying is, uh, you need to check that the so if you don't take relative error, suppose that you don't take relative error, you are just taking x of I plus 1 minus x of I, right? And you are comparing it with tolerance, which is probably 10 to the power minus 4 or minus 5. So if the actual solutions are of a very small value and they are of the order of 10 to the power minus 5 or 6, then it may happen that x of I plus 1 and x of minus x of I Okay, uh, okay, got it. can go beyond the it can go under the tolerance, but still Yeah. is not the correct solution, right? Still it's Yes, not got it. converged. So in that case, you need to make it relative so that you get the right perception. Mm. Otherwise, if you think that the solution will not be as small, then you can just take the simple difference here. Okay, so. But like in the, I think in the lecture notes, it was written that ma'am was not taking the relative, ma'am was only taking the absolute. So I felt like that would be. So absolute is generally it's taken, but in some cases you can see that you can, like in this question, since Ca naught is 1 mole per liter, so you can see with mass balance that somehow it will be similar to that in the final solution also, right? Because this is just reactions. These are just reactions, and A is getting converted to B and C, and then B is getting converted to D and C. Therefore, in the final solution, uh, finally what can happen is A can get totally consumed, right? And then B will be probably one half, and then B one half will be getting converted into D and C. So it will be around zero point 0.5 to 1. It's what I feel. So I think here also it will not make any difference if you take any of the two convergence criteria, but yeah, you can make the judgment on your own based on the solution what you think it will come.
वन मोर डाउट वाज, जैसे हम लोग इनिशियली कोई भी फंक्शन लाइक F1 को भी इकट्ठा, पहले सारे CA टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, एंड एंड देन वी वुड क्या फाइंड द कर जैकोबी. जैकोबी के लिए you need to just find the derivative of every function, right? Yeah, with like every variable, every function. Yeah. So हाँ. that would we do it? We can't do it manually, right? We have to use the computer. So, but then how will we make the computer know? You know what will be the manual derivative. You can do it manually. You can just make the function, right? Okay, because we know it's only linear. So, So matlab, there are two ways to find derivative, right? If you know by now. First is manually इसका derivative क्या होगा कि मतलब सी ए हर फंक्शन को हर वेरिएबल से तुम्हें डेरिवेटिव लेना है. हाँ, So right, first function you have to take derivative by CA, CB, CC, CD, everything. So that you can do and fill up the values of the Jacobi function. hmm. Otherwise, you can also do something like that. Key numerical methods. You, I don't know if I've read by now, but numerical method is also there to find derivative, which is like what you do with the mm, Like LMVT. LMVT, something like that. You can do, or if you understand it in form of Taylor series expansion. Hmm. So a small difference in the function, and you can apply a small difference in the function, and from that you can find the derivative of the function, neglecting the higher order terms, right? So that way also you can find the derivative. But since these are simple functions and you can just, so both ways are there. You can find it manually also, or you can find numerically also. No, but the problem is like when we put in the computer, we don't keep it like when we are saying that suppose we are taking for CA. So like CA naught would have some value, that's fine. But then CA has a power 3 by 2. So when I put X, X, like POW, X comma 3 by 2. So over there, the X has to have some value. Like without having value, I don't think we'll be able to perform any derivative on it. Or how will it store that value? तो उन Okay, टर्म्स में मुझे डाउट हो रहा था. you need to make a function of that derivative. So in which I'll have to pass the power of. Yes, So power. पावर होल्ड करने के लिए अलग से भी एक पूरा रखना पड़ेगा. नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुमको फर्स्ट जो जैकोबी का फर्स्ट टर्म निकालना है, तो व्हाट विल यू डू? df1 upon dou f1 upon dou ca, right? सी ए. तो dou f1 upon dou ca क्या होगा? -1, this is 0, this is minus k1, this is minus k2, इंटू 3 बाई 3 2. by 2 to ca half, हाँ, ca to the power half. और वो So 30 this, से 0 हो जाएगा नेक्स्ट. so you can make a function such that you know all the terms of the Jacobi, and you can just pass the value of ca, cb, cc, and cd of every iteration in that function. Powers change ही होंगे Jacobi में. ओके, पावर्स चेंज तो नहीं होंगे. नहीं, वो तो ठीक है, बट my point was I'll have to save the powers somewhere so that I know कि, but okay, so I You need to save the powers. You need to find the derivative. I'll have to find a derivative, but for that मतलब I should know कि उसकी power 3 by 2 है ना. तो You, क्या, and you told to तो make a तुम्हारे, function to find the okay, Jacobi. okay. So, So you don't need to write a general program. You need to oh, write a specific program for this one. oh, okay, ठीक है, फिर ठीक है सर, thank you. Okay. So, sir, in that case, there will be 16 equations kind of stuff, no? For each term of Jacobi, at least for this example. Uh, 60, for each, yes, 16, Mm-hmm. yes. But some of them will be zero only, because you know that Yeah. F1 is not dependent on CB and CD.
So you can just write 0 there. Yeah. So, okay, you need फिर तो ठीक है बट general यहाँ सबमिशन पे लिंक निकाल नहीं सकते न्यूटन रैफसन में, because you need to find the function value also, and to give the function value you need to know what the function is, right? General निकालना possible नहीं है यहाँ पे. You need to know for specific function, you need to code the function, and then you need to find the function value, you need to find the derivative value, you need to find the inverse of the derivative. Okay. मतलब फिर भी आई थिंक मतलब जनरल के लिए पॉसिबल होता, पर उसके लिए फिर आपको मतलब पॉसिबल इन सेंस तो मुश्किल ही होता. मतलब मैं सोच रहा था कि फिर पावर्स का अलग से एक मैट्रिक्स में पावर सेव करना पड़ेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी एक्स की वैल्यू है, और मतलब उस तरफ जा रहा था. बट सर सबमिशन लिंक कब की हुई? क्योंकि मतलब लाइक 18th के बाद तो कोई वर्किंग मतलब सारे एग्जाम के दिन है, तो सेम ट्यूसडे को ही होगा क्या? ट्यूटोरियल के एक दिन पहले होगा. तो वो अगला ट्यूटोरियल तो फिर नेक्स्ट वीक होगा ही नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो एग्जाम है. हाँ, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के एक दिन पहले नेक्स्ट वीक होगा. So it's 2 week time, right? हाँ 2 वीक्स. राइट. चलो माइनर के लिए कोई टिप्स है? मतलब कहीं से पढ़ना या कहीं से कुछ रेफर कर लेना फेवरेबल होगा, कैसे टाइप के क्वेश्चन? आउट ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपका कोई टिप हो तो. तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट था. तो हमारे टाइम पे प्रोफेसर चौकसी पढ़ाते थे, तो आई एम नॉट श्योर कि अगर जयती सर का कैसा होता है माइनर. ओके. तो कोई और डाउट इसमें लास्ट वाले में सबमिशन थोड़े कम हो रहे हैं. असाइनमेंट 3 में 1 हफ्ता कम पड़ रहा है क्या? सर ऐसे क्वेश्चंस के जवाब कंट्रोवर्शियल होंगे, ऐसे खुले में तो कम ही लोग देंगे जवाब. नहीं, मतलब ओपनली बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो लास्ट टाइम सेकंड क्वेश्चन में शायद स्पेसिफिकली लिखा नहीं था कि तुम्हें कोड करना है. तो इफ सब किसी ने अगर किसी ने पॉइंट आउट किया कि स्पेसिफिकली कोड करना है तो लिखा नहीं है, तो अगर किसी ने इटरेशंस वाला एक्सेल फाइल में भी दिया है तो ठीक है, इट्स फाइन. क्या सर आपने क्या बोला? आवाज कट गई. सेकंड क्वेश्चन असाइनमेंट थर्ड था ना, वो असाइनमेंट थर्ड था. अच्छा सर, सेकंड समझ गया. क्वेश्चन असाइनमेंट थर्ड में शायद कोड स्पेसिफिकली लिखा नहीं था, प्रोग्राम. तो अगर किसी ने एक्सेल में किया, बट प्रोग्राम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट अगर किसी ने एक्सेल में किया तो दैट इज ऑल्सो फाइन. आज कुछ लोगों का है ना शायद वाइवा. कब है? यस सर. टाइम नहीं दिया है क्या तुम्हें? दिया है लाइक मतलब आई थिंक 5:30 के बाद. आई नो, मेरा तो 5:55 पे. 6:30 के बाद है. मेरा 5:55 पे आई थिंक. 5:55 से. सर 5 से शुरू है, 5 o'clock से. अच्छा, इसीलिए कम लोग आए हैं. ठीक है. सर लेक्चर 13 में डाउट था, अगर कोई कुछ नहीं पूछ रहा तो. पूछ लो. स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या?
करो तुम स्क्रीनशॉट, तुम कर सकते स्क्रीनशॉट या नहीं कर सकते? अभी तो मेरे पास एक्चुअली वो लेक्चर की शीट्स नहीं है तो डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, कहाँ पे डाउट? इसमें वही अभी जेकोबी का जो आप दिखा रहे थे उसमें वो जे ट्रांसपोज जे प्लस बीटा वाला जो स्टेप है इसके बाद में। अच्छा, ये वाला स्टेप, ओके। तो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ये जो है सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो हम ये यूज करते हैं, अदरवाइज मतलब ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज दिस थिंग ये यूज, अगर वो स्लोप जो है वो जीरो होता है तो अगेन सिंगुलर, सम काइंड ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें बस यही है, यहाँ पे जैसे स्लोप जीरो होता है ना, तो इसमें बेसिक आइडिया क्या है कि ये जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है फिर वहाँ से फंक्शन की वैल्यू क्या है, एंड देन वी गो ऑन फाइंडिंग द नेक्स्ट इटरेशन। अगर ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो वो एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगा, राइट? तो वो हमेशा इसी पे अटका रहेगा। तो दैट्स व्हाई वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ है, वो बीटा ऐड कर रहे हैं, है ना? यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, वी आर एडिंग सम काइंड ऑफ बीटा सो दैट इट इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल। तो वो सिंगल वेरिएबल में वो ग्राफ के प्लॉट करने के थ्रू पता चल जाएगा, बट मल्टीवेरिएट में वो प्लॉट मुश्किल होगा दिखाना। सो इट इज सिमिलर टू दैट। हाँ, सो सर ये वाली कंडीशन हम सिर्फ उस स्टेप के लिए लगाते हैं जिसमें जेकोबी का सिंगुलर आता है या हर स्टेप में फिर लगाते हैं? जैकोबी सिंगुलर आता है तब हम ये यूज करते हैं, किसी भी स्टेप में यूज कर सकते हैं ये। तो दिस इज ऑल्सो जनरल काइंड ऑफ थिंग। No, like the first 4 iterations are done on the above code and then next 2 iterations are the below ones. Can that? हाँ, वो भी हो सकता है। If you so you can do this thing also. You can check the determinant of Jacobi inverse. If it is zero, so go to that. Otherwise, use this thing. You can do like that also. तो प्रेफरेबल क्या है असाइनमेंट के सबमिशन में, मतलब? हाँ, मतलब what we are expecting is तुम Jacobi inverse भी लगाओ तो वो हो जाएगा इसमें तो। सर वरना अगर ना भी कर तो भी हमें बीटा की वैल्यू तो अपने आप से पता नहीं कैसे ढूंढेंगे कि क्या बीटा वुड बी प्रेफरेबल, सो वी हैव नॉट इवन थॉट दैट। तो Beta actually is just a small value which हाँ, वो मैम ने बताया था, बट मैम टोल्ड दैट इट्स अ वैल्यू व्हिच हेल्प्स इट रीच द पॉइंट। तो वो हाँ हमें नहीं पता कि मतलब एक्चुअल गेस कैसे करना चाहिए बीटा के लिए, लाइक कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, कितने ऑर्डर में लेना है उसका कोई आइडिया नहीं दिया मैम ने। हाँ, ठीक है, तुम लोग जैकोबी इन्वर्स यूज कर लो, वो भी सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ठीक है। ठीक है सर। तो सर इस क्वेश्चन में जो टेस्ट केसेस रहेंगे वो डिफरेंट स्टार्टिंग कंडीशंस रहेंगी ऐसा? टेस्ट केसेस कुछ रहेंगी नहीं इसमें। इसमें तुम्हें इनिशियल गेस लेना है, सॉल्यूशन निकालना है। ओके। एक सर लेक्चर 14 में बेस्ट मेथड में भी था। ट्यूटोरियल में नहीं है, प्रॉब्ली नेक्स्ट वाले में होगा असाइनमेंट, तब डिस्कस कर लेंगे वो तो। ओके। नेक्स्ट होगा ही, नेक्स्ट में प्रॉब्लली, है ना? तो मीटिंग लीव कर लें, बाय हाँ, बाय। जिसको जाना है वो जा सकता है।
So for initial guess, what you can do is CA not दिया है and others तो दिया नहीं है, so you can take others as 0, right? Because A से B फॉर्म हो रहा है, A से C फॉर्म हो रहा है, and then B से D and C फॉर्म हो रहा है. So initially I think there is only A, therefore B initially नहीं होगा, that's why given भी नहीं है B. ठीक है, तो take CA not A and others as 0 and then find the solution. Okay, मैं ये एक बार इंस्ट्रक्शन डाल भी दूंगा. So I'll be here 10 minutes more. अगर किसी को डाउट है तो then I will close the meeting. तो इसके रिगार्डिंग आपको उसको आइडिया है कब है कोई? No idea. कोई कब है? अभी तो माइनर है ना, तो नेक्स्ट वीक. हाँ जो माइनर है, पर लाइक मैम ने अचानक से सारे लेक्चर एक ही साथ दे दिए, मतलब जितने चाहिए थे, मतलब मैम जनरली 5 लेक्चर देती है फिर एक क्विज होता है, तो मैम ने वो 5 लेक्चर दे दिए, मतलब अचानक से 3 लेक्चर दे दिए एक दिन में, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है. क्विज तो ट्यूसडे को होता है ना तुम्हारा सर? जनरली मतलब हाँ, वो हर 5 लेक्चर के बाद मैम बोलते हैं, तो ठीक है फिर तो माइनर के बाद ही होगा मोस्टली. सर असाइनमेंट की डेडलाइन वही ट्यूसडे है. नेक्स्ट वीक नहीं होगी असाइनमेंट की डेडलाइन, नेक्स्ट ओके ट्यूटोरियल के एक दिन पहले होगा. ओके ओके ग्रेट, थैंक यू.
So if there are no more doubts, so I'll be ending it now, and जिनका भी कोई है वो लोग join कर लें अपना. Okay. Bye.